Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here live in this night session. Okay, so today I won't say evening session. So first of all, let me go and check on Facebook who's live with me over here so I can just start with the session. And in the meantime, you can guess what I plan to talk about today. Okay. So as soon as I see someone here live with me, I can just start with the session. But I guess it's still time 7:30. I'll just mute the voice from the other side so I can't hear the voice in rebound. Okay. So now I'm ready and let me just see who's going to be here live. And anyone who's watching, do let me know where you're watching from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from Lahore, Pindi, Karachi, or wherever district you are from Quetta, Balochistan? So wherever you're watching from, you can just tell me and use this comment box to tell me where you are from. Okay. I hope everyone is, those of you who are fasting are having a good Ramadan and having good fast as well. So do tell me what kind of experience you are having this Ramzan. Like every Ramzan, we have different kind of experiences. But what's special about this Ramzan, or how are you feeling towards the overall Ramzan and the environment around you in your home, everywhere? Okay. So it's again showing me signs of slow connection, but it's still working. So I'll just keep on watching and let's see what happens. Okay. So क्या अभी अफ्तार हुआ नहीं है या अभी भी आप लोग अफ्तार कर रहे हैं? Okay. So where is everyone? Can't see anyone at the moment. Or maybe there are people and I can't see them. So it will all be shown in due time. And yes, there is someone's watching. So who's this? And what do you think about today's topic? Jan Muhammad, walaikum assalam. I hope you're fine and fasting as well. Okay. So what do you think about this topic? Like what I plan to talk about today is um, like how you can manifest positive relationships and how you can foster them. So that's what I plan to talk about today. Like most of the time we hear that we need to surround ourselves with positive people or positive minded people or growth mindset people, and then like uh, most of the time we are the ones who are expecting, but this overall fostering good relationships and positive relationships. I'm fine, Jan Muhammad, thank you so much. So it's a two-way process. So you can't always expect from people that you're going to find good people and they have to be good. In return you need to do the same thing. You need to be good as well. So जब आप चीज़ रेसिप्रोकेट करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है बनिस्बत इस चीज़ के कि if you keep on expecting something from the other person and in return you do not give anything. So fostering good relationships, it's a two-way process and you need to do it. So when you expect someone to respect you in the same way, you have to respect the other person as well. So आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मैनिफेस्ट एंड और फॉस्टर गुड रिलेशनशिप विद पीपल. सो उसमें मंसूरुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन. ओके, this is freelancing, marketing freelancing. I'm fine, alhamdulillah. I hope you're fine too. Ali Usman, walaikum assalam. I hope you're fine. So now I can see some similar names. Rais Nasibullah, walaikum assalam. आप भी ओके, थैंक यू सो मच भाई, आपको भी रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो. ओके, सो सबसे पहले जो है ना, जो चीज़ हम लोग देखेंगे दैट इज़ यू नीड टू चूज़ योर सर्कल. लाइक यू हैव दिस माइंड एंड यू हैव दिस क्रेविंग
कि भाई आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग होने चाहिए, पॉजिटिव माइंडेड लोग होने चाहिए, and you need to you are always thinking about positivity from people. But then again, what you need to do, what is the foremost thing which is required, is that you need to surround yourself with such people. अगर आप अपने इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव लोग सराउंड करेंगे तो देन ऑब्वियसली जो आपकी एक नीड है वो पूरी होगी. गुलाम कदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग इट. सो सबसे पहले यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. अगर आप लाइक अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये चीज़ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. सो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू कि आप अपने आपकी जो थिंकिंग होती है वो ऐसी ही हो जाती है जैसे आपके इर्द गिर्द में लोग होती है. अगर आपके इर्द गिर्द जो है नेगेटिव लोग होंगे या टॉक्सिक माइंडेड लोग होंगे तो आप नो मैटर जितना भी जो है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ को अप्रोच करते हो, but still in the end you will also turn out to be toxic like them, not unless you have this ability to aloof yourself. Like if I'm a positive minded person, I would always look for people who are positive or who can uplift me or inspire me so I can do more good. बट देन अगेन इफ़ आई वुड स्टार्ट थिंकिंग कि ओके नहीं भाई ज़िंदगी तो है ही जो है नेगेटिविटी का नाम एंड देयर इज़ टॉक्सिसिटी एवरीवेयर, सो क्या फ़ायदा है अच्छा सोचने का. तो देन इन द एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द रिजल्ट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टर्न नेगेटिव एंड टॉक्सिक लाइक द पीपल. सो इफ़ आई वॉन्ट टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, आई नीड टू engulf myself or surround myself with people who are positive thinkers or who respect the idea of what I am doing and they're positive in their thinking as well. So हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ या इर्द गिर्द उन लोगों के रखें जो कि आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको बूस्ट करते हैं. एंड देन इन रिटर्न क्या होता है, इन रिटर्न यू ऑल्सो डू द सेम थिंग. You become a role model for many people and then people look up to you and they're inspired by you and they come to you and then you are in that status or you are in that bent of mind कि you can always motivate them and you can always provide them with solution. So the number one thing in order to surround yourself with positive people is you need to choose your circle wisely, and it has to be a circle which is focused on growth mindedness, which is focused on motivation, which is focused on uplifting. So when you are going to receive the same things, you are going to give the same things as well. और अगर यानी it's not a I would say it's not a hard to fast core rules ना, कि अगर आपको जो है like if you are giving positivity तो आपको in return positivity मिली हो. So it's a mix. So then again you also have to have that mindset which is a growth mindset. You are going to reciprocate every kind of people, but then उसमें से आपने अपने लिए positivity select करनी है और इस तरीके से फिर आप आगे चल सकते हैं. So this is the number one thing. The second thing in this is you need to create a supportive environment. Now most of us when we are going to offices या workplaces में जा रहे होते हैं, we always expect that आगे से हमें जो environment मिलेगा that's going to be a very positive environment, it's going to be a relaxing environment, उधर काम करके भी मज़ा आएगा. So at times इस तरह नहीं होता, क्योंकि when you go to different offices या different work setups जो होते हैं, हर एक अपना setup होता है, and then eventually you have to adjust into that setup, and it's not necessary it's going to be all positive, it's going to be a mixed setup. But then again ऐसी चीज़ें जो आपकी values के साथ जो है compromise ना हो, you can always adapt yourself into that setup. But अगर जो है कोई ऐसा setup है which is very toxic and which is totally against your values, whatever your values are, जो जिनके साथ जो है you are not comfortable कि you are not going to give in for those values, so then you don't have to get into that setup or accept that setup. You can simply leave क्योंकि the choice is totally yours. Either you want to get involved into that setup and become a negative person, or you can just walk out. So the decision, you have to make that decision, no one else can make that decision. So when we talk about creating a supportive environment, so in the same way you also need to create a supportive environment, and that environment you can create in your workplace, in your family life, in your home, everywhere. या जो लोग आपसे जो है आपके जो सर्कल में हैं, like when they come to you, you should have this capacity of
like motivating them or uplifting them or listening to what they have to say. And जब आप लोगों को जो है uplift करेंगे, उनकी skills को acknowledge करेंगे, उनको appreciate करेंगे for what they are doing, so they are going to come to you again and again and they'll feel happy and they will ultimately become more productive. अगर कोई जो है आप ये चीज़ देखें, it's a very common thing and most of you must have observed in your daily lives as well कि अगर जो है घर में कोई बच्चा होता है and that बच्चा is not so good in studies, so instead of scolding that child, instead if you understand the psyche of the child and you know provide that child with some kind of comfort and आप उसको एडवाइस दें, आप उसकी बात सुने, आप उससे पूछें कि भाई आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, जो आप थोड़ा सा इनकरेज करेंगे ना उस बच्चे को, तो नेक्स्ट टाइम he would show much more good performance than he actually does. So you must have noticed जिनके घरों में बच्चे हैं या छोटे बहन भाई हैं या those who are siblings who are studying, और even आपने अपने टाइम में भी ये चीज़ नोट की होगी कि when you are in the struggling phase और स्टडीज़ में तो कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में लाजमी सफरिंग फेज में होता है. सो पेरेंट्स डू पुट इन दैट सपोर्ट, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बड़े बहन भाई हों, दे ऑलवेज provide those environments which are supportive environments जिसमें the siblings or the young ones they are able to perform good. So this is another thing, you need to create a supportive environment. Okay, let me take the comments. I can see someone at the top of my screen. Ehsan Khan, thank you so much for joining and watching this session. Ghulam kaisa hai? Walaikum assalam. Okay, so आगे चलते हैं. क्रिएटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट एक चीज़ होगी, चूजिंग योर सर्कल अनदर चीज़ होगी. अच्छा, फिर उसमें इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, अच्छा क्रिएटिव सपोर्टिंग इन्वायरमेंट में एक और चीज़ जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि यू नीड टू encourage open communication. ओपन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पीपल कैन कम टू यू. अब उसमें अगर आप अपने एक जो है ना दीवार खड़ी कर देते हैं कि भाई आई एम द बॉस एंड नो वन कैन कम टू मी, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने ओन एंड पे जो है रिजॉल्व करे, सो दैट डज नॉट वर्क. सो इवन इफ यू आर अ बॉस, स्टिल you have employees who are working under you, or they're working as your core partners या जो भी आपका setup है, so they too need some kind of guidance and they will come to you. So instead of कि वो आप अपने माथे पे एक टैग सजा लें कि भाई I am the जो है CEO and no one can come to me, you have to place yourself as a common person with them. Like CEO तो आप होंगे ना, कंपनी के CEO होंगे, but when you are working and if you want to get the work done according to yourself, so you need to communicate, come down from your pedestal and come down at the human level and discuss things with your employees या जो आपके co partners हैं. So उसी तरीके से आपको जो है आपका काम जो है होता हुआ महसूस होगा, और whatever your ideals are, whatever your goals are, so if you want to achieve them, you have to become a human first. So that's another thing. So for that you have to have open communication. और वो कंपनी जहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन होती हैं, ओपन जो है मीटिंग्स होती हैं, ओपनली जो है स्केड्यूल सेट होती हैं. इट्स नॉट दैट कि स्केड्यूल्स क्लोज डोर्स में जो है काम हो रहा है, दो टोटल कमेटियाँ बनी हुई हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू see कि भाई how much goals you have achieved. So you can't achieve goals like that. You have to take the whole team on board, and then you have to assign work accordingly according to the skill set, and that's how things go on. So this is another thing. अच्छा, फिर उसमें एक और जो चीज़ आ जाती है which is very important for fostering good relationships, that is you need to become an inspiration. और inspiration आप इसी तरीके से बन सकते हैं कि you need to lead yourself as an example जिनके पास जो है लोग आ सके. सो इंस्पिरेशन तो इसी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव इंस्पिरेटर्स, और कोई ना कोई होगा जिससे आप लोग इंस्पायर हुए होंगे, किसी की बुक से आप इंस्पायर हुए होंगे, किसी से एज अ पर्सन आप इंस्पायर हुए होंगे. सो यू नीड टू like everyone has to become a role model for someone. So if you think कि भाई I'm good at this thing, so you have to become a role model. So आपकी जो कंपैरिजन होता है या आपके जो
कंपटीशन होता है वो आपके अपने साथ होता है. सो यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल in becoming the best version of yourself, automatically you become a role model for other people's. So you become a source of inspiration, and other people's are inspired by what you are doing, and that's why they come to you and ask for your advices and suggestions and whatever solutions you can offer them. So this is another thing. अच्छा, then उसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू रिकग्नाइज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस. और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ योर सर्कल ऑन योर माइंड सेट एंड बिहेवियर. अब देखें, आपका जो सर्कल होता है ना, उसके मुताबिक ही आपकी थिंकिंग हो जाती है. जिस तरह आई हैव टोल्ड यू कि इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, या इफ़ यू हैव पीपल हु आर पॉजिटिव इन योर सर्कल एंड दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, सो आप भी फिर जो चीज़ जो है बोलना शुरू करेंगे, इट वुड रिफ्लेक्ट दैट अल्टीमेटली. अब इसको जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं, तो अब ये देखिए कि दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, या हु माइट बी टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़, या आप अगर ख़ुद किसी जो है कोर्स में एनरोल हैं, तो आप ये चीज़ देखते होंगे कि भाई अगर हर रोज़ आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, अब उस लेक्चर का जो भी मोड होता है, लाइक हो सकता है कि आपने जो लेक्चर पढ़ा हो तो उसका जो मोड है दैट वाज वेरी पॉजिटिव. सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट ये होगा कि इन द इवनिंग, लाइक इफ़ यू हैव अ सेशन और इफ़ यू हैव अ क्लास, या इवन इफ़ यू गो बैक टू योर होम्स, तो you would be representing or presenting that positivity into your tone, into your body language, overall behavior, or whenever you're going to talk to people, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है आपका उभर के जो है बातों में आ रहा होगा. बट देन अगेन, if you study a subject which represents too much of negativity, politics के हवाले से बात होगी, economic depression के हवाले से बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात होगी, पावर्टी एलिवेशन के हवाले से बात होगी, या पावर्टी नंबर्स के या पावर्टी इंडेक्स के हवाले से बात होगी. सो ये जो सारी चीज़ें होंगी, एज अ रिज़ल्ट ये आपकी पर्सनालिटी पे किस तरह इफ़ेक्ट करेगी कि व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, या व्हेन यू आर इन योर होम, तो वो जो आपकी नेगेटिविटी है जो आपने पूरे दिन जो है एब्जॉर्ब की होगी, वो फिर आपकी बातों में निकल निकल के सामने आ रही होगी. घर वालों के साथ अजीब से जो है ना, आपका मूड जो है, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, चिड़चिड़ापन हो रहा होगा. सो दिस इज व्हाट योर कंपनी डज टू यू. कि अगर आपकी कंपनी जो है इट्स नेगेटिव, तो या अगर आप कोई चीज़ जो है नेगेटिव पढ़ रही हैं, तो इट्स गोइंग टू इफेक्ट यू नेगेटिवली, क्योंकि ओवरऑल वो आपके मूड पे और पूरे ओवरऑल जो मूड स्विंग्स है उसको एक डिफरेंट तरीके से उस पर असर करे होगी. बट देन अगेन, इफ़ यू हैव सराउंडेड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड यू आर गोइंग थ्रू पॉजिटिव थिंग्स, और यू रीडिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, तो वो आपके मूड को एक डिफरेंट वे में ऑल्टर कर रही होगी. सो ये कभी चीज़ जो है ऑब्जर्व करके देखिएगा कि आप अगर कोई जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने तो खैर आपको यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट्स के हवाले से एग्जांपल दिया कि इस तरीके से होता है, पर यह है कि ये दिस इज़ वेरी मच ट्रू इवन इफ़ यू आर वाचिंग समथिंग, if you are watching a program and that program is full of action and thrill and adventure, तो आपका जो मूड है वो एकदम अपलिफ्ट हो जाएगा, एंड यू वुड फील वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी इफेक्टिव, एंड यू वुड वांट टू डू थिंग्स जो कि फिल्म में हुई होंगी. बट देन अगेन, आप कोई ऐसी मूवी देखें विच इज़ वेरी सैड और एट द एंड जो है सारे मर गए, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको एक डेरोगेटरी वे में इफेक्ट करेंगी. फिर मूड जो है अपलिफ्ट नहीं होगा, उल्टा जो है मूड में डिप्रेशन हो जाएगी, अजीब से स्ट्रेस आ जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, रोने को दिल करेगा, एंड यू वोंट फील लाइक टॉकिंग विद एनीवन. सो दीज आर द थिंग्स विच डू हैपन, एंड देन ये उसी चीज़ में आता है, यू हैव टू रिकग्नाइज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस. के आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपके इर्द जो लोग हैं, उनका जो माइंड सेट है, हाउ इज़ इट इफेक्टिंग यू, is it affecting you positively या is it affecting you negatively. So this is another thing. अच्छा, then इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, you need to nurture reciprocal relationships. अब जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि as humans we always want to have everything for ourselves, but the thing is जो रियल लाइफ है, या जो ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ है, या इवन जो हमारा रिलीजन भी हमें ये चीज़ सिखाता है, if every one of us just realize our obligations towards the other person,
तो जो हमारी ज़िंदगियां हैं वो खुद एक परफेक्ट एग्जांपल बन जाएंगी, एंड देन इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ हैप्पीनेस. वी वोंट हैव टू लुक टूवर्ड्स अदर पीपल फॉर आवर हैप्पीनेस. सो इफ़ एवरीवन, अगर हर एक जो है ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि भाई उसके भी सर्टन फ्राइज़ हैं लोगों की तरफ, और वो उन फ्राइज़ को जो है अदा करने की कोशिश करता है या शुरू कर देता है, तो हमारे जो ओवरऑल सोसाइटी है वो एक परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है. So this is what we need to do. When we expect others to respect us, we need to reciprocate the same respect to them. अब ये जो है सिर्फ ये सोसाइटीज़ में नहीं होता है, ये और सिर्फ इंडिविजुअल्स में भी नहीं होता. दिस अप्लाइज टू एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. अब चाहे उसमें जो है आपकी जो है फैमिली आ जाए, उसमें आपके जो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आ जाए, उसमें आपके चिल्ड्रन आ जाएं, सिबलिंग्स आ जाएं. यानी आप जब किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, तो यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट बैक. सो दिस इज़ द कोर प्रिंसिपल एंड एसेंस ऑफ लाइफ. अगर इसको जो है लोग जस्ट एनालाइज कर लें, एब्जॉर्ब कर लें कि भाई दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रू लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट every one of us need to do. If we are expecting something from the other person, we need to reciprocate it and give it to the other person as well. अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी लेते जाएंगे एंड इन रिटर्न आप कुछ भी नहीं देते, तो देन आपने तो फिर अपना फ़र्ज़ नहीं अदा किया. सो एज अ रिज़ल्ट आपने क्या करना है कि यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल, यू नीड टू रेसिप्रोकेट इट बैक इन द सेम वे. अब इसमें जो है रेसिप्रोकेट कि उसमें जो है, अगर हम अगेन रमज़ान वाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. सो अगर आप सिर्फ यानी हम अगर टीचर्स के पर्सपेक्टिव में देख लें, तो टीचर्स आर गिविंग अ लॉट. चाहे वो जो है यानी दे आर गिविंग इन एवरी फील्ड, उनका जो भी सब्जेक्ट मैटर हो, वट एवर हो, सो दे आर गिविंग, एंड इन रिटर्न व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इट्स रिस्पेक्ट. सो when you are imparting, या there are times like अब जो हमारी यूथ है, इट्स ख़ास तौर पे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें लाइक आई एम शॉक्ड कि भाई किस किस्म के वो बच्चे आ रहे हैं. दे सिंपली डू नॉट हैव रिस्पेक्ट. बट देन अगेन देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत वेल ग्रूम्ड है. सो वी एज पेरेंट्स वी नीड टू first establish our foundations of a family. So वो जो fundamentals of family हैं, अगर वो हम inculcate करते हैं अपने स्कूल सिस्टम्स में, तो आप बाद में करेंगे. पहले तो जो है बच्चा घर से ग्रूमिंग लेकर आएगा, बट देन अगेन जो सोसाइटी है, जो पीयर प्रेशर्स है, जो स्कूल है, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग द चाइल्ड. बट देन यू हैव टू ट्रेन देम इन द राइट वे, ताकि इन द एंड जो प्रोडक्ट निकले दैट इज़ द प्रोडक्ट जिस पे जो है आपको फ़ख्र हो कि यस हमने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है. So this product is related with the generation I'm talking about. It's not about anything an item or anything we purchase. So it's basically about human unit जिसकी मैं बात कर रही हूँ. परवेज़ अहमद जी, तो thank you so much for joining and watching this session. So this is regarding nurturing reciprocal relationships. और उसमें देन अगेन एक और चीज़ ये आ जाती है कि यू नीड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ पीपल अराउंड यू, इन अ फैमिली, इन योर वर्क एनवायरनमेंट, इन योर पर्सनल एनवायरनमेंट एज वेल. सो जब तक आप जो है यानी आप सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि आई शुड बी एट द टेकिंग एंड आई शुडंट बी एनीवन हु शुड बी एट द गिविंग एंड, तो थिंग्स इस तरह वर्क नहीं हो करती हैं, एंड यू कैन नॉट फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशंस इन दिस वे. So you need to cultivate relationships which are based on reciprocals. You need to um, you know um, you need to celebrate each other's achievement and milestones, whatever they are. चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, just celebrate them. ये चीज़ तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपकी अपनी भी जो सक्सेसेस हैं वो छोटी हों या बड़ी हों, उनको सेलिब्रेट करें. डोंट कीप ऑन वेटिंग फॉर बिगर सक्सेसेस या बिगर माइलस्टोन्स जिनको आप सेलिब्रेट कर सकें. हो सकता है जब वो आपको मिलें यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. सो वाई टू वेट फॉर दैट टाइम, रादर देन इजंट इट बेटर कि जो आपको छोटी छोटी भी जो है माइलस्टोन्स या अचीवमेंट्स मिल रही हैं, तो सेलिब्रेट दोज एंड बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल. अच्छा, देन इसमें जो है एक और चीज़ जो है जो आ जाती है, दैट इज़ यू नीड टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी. जिस तरह मैंने आपको
कल के जो टॉपिक था उसमें बताया कि भाई when you embrace diversity and you have compassion and empathy towards other people of different cultures and tradition, तो उससे जो है you learn a lot and you broaden your horizons and you see the world in a different way. So that is what you need to do in fostering good relationships. You need to embrace diversity and you need to recognize the value of different perspectives. And then again, you have to surround yourself with people coming from different backgrounds and different diverse uh, which are from different diversified groups, and they belong to different cultures as well. और उससे जो है क्या होता है, उससे जो है आपके जो ओवरऑल नॉलेज है उसमें एक एनहांसमेंट आती है, उसमें रिचनेस आती है, एंड यू आर प्रोन टू लर्न फ्रॉम other people of different nationalities. So this is uh, this is all regarding fostering positive relationships, and this is how you can foster positive relationships according to my point of view and according to my personal experiences. और अगर आपके कोई जो है एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, सो डू लेट मी नो, एंड in the meantime I'll see if I have missed any comment. Okay, and I can see someone at the top of my screen. I'll just see if I can bring this person on camera. Let me just see. So if anyone of you have any question, do let me know, and for this the comment box over here, so you can write your questions and suggestions and comments whatever those are. Thank you, Lydia. Thank you so much for your emoji. Okay, so Ramzan Wawala decline. So apparently, I do not have anyone at the top of my screen. If anyone would want to, come live on camera, could you let me know? I can bring them live. और अगर ये है नहीं है possible, तो you can always let me know about the comment. अगर आज के topic आपको समझ आ गया हो and you agree with me, then show me your emojis. I will say, wow, I can use those emojis, and those are quite a lot of emojis which I'm seeing. Okay, thank you so much. Oh, you crying वाली emoji दिखती है भाई. Why are you crying? ऐसी कौन सी बात कर दी है जिससे आपको रोना आ गया? So do let me know, okay? Why are you crying? So I guess that would be all for today, and inshallah, then tomorrow I'll come again with another different topic and different insights here. So let's see what can be that topic. And if you want me to discuss any other topic, you always pour in the suggestions in my comment box and let me know. So I'll discuss those topics as well. So till tomorrow, bye bye and Allah Hafiz.